For losing a broom, this 10-year-old girl says she was beaten and her hands were burned. This 16-year-old boy died allegedly after being assaulted again and again. Their horrific stories highlight the plight of some children working as servants in the homes of the rich and powerful in Pakistan. But their desperately poor families often choose not to pursue the cases. Meaning those accused of abuse regularly go unpunished. Wherever you go in Pakistan, you can see young children working to support their families. But others are less visible, working behind closed doors in upmarket neighborhoods. Tens of thousands of children are sent by their impoverished families to work as domestic servants in homes across Pakistan. Some of them are aged as young as 8 or 9 years old. And in most of the country, there's simply no law whatsoever preventing anyone from hiring them. ये वाली story है. अच्छा. 10-year-old Taiba is learning to be a child again. She is very fat. She used to work hundreds of miles away from her family in the home of a judge and his wife in the capital Islamabad. Television. Very good. These pictures of her taken in late 2016 caused outrage on social media. Dave is currently being looked after at a children's home run by a charity. Sitting with her best friend and her carers, she agreed to talk to us. कि या किसी ने आपको बताया हो कि आप जब बहुत छोटे थे तो आपको उन्होंने जज के घर काम के लिए क्यों भेज दिया था? वो उन्होंने कर्जा देना था इसलिए। उन्होंने आपको बताया था ये बात कि कर्जा देना? अम्मी ने बताई थी मुझे। The couple employing her have denied mistreating Taiba, but she told me she was beaten by the wife just for losing a broom. उन्होंने मुझे मारा था, उन्होंने हाथ भी जलाया था, इसलिए मैं छुपा दिया था उन्होंने मुझे। फिर ये देखिए ना इसके हाथ पे ये जो निशान है ये इसी तरह है, जलाया था उन्होंने। अभी भी डर लगता है थोड़ा सा। अब याद आती है पुरानी बातें? कभी नहीं याद आती, हम याद करते ही नहीं हैं। खेल के भूल जाते। The children here are divided into houses, each with a specific carer or mother to look after them. Azmat has been helping Taiba recover from her ordeal. जब मसलन कोई चीज़ इसको मिल नहीं ना रही, कॉपी नहीं मिल रही, तो फिर ना इसको वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, टेंशन हो जाती है कि मुझे चीज़ नहीं मिल रही ना। मुझे भी उससे लेवल पर समझती थी ना कि शायद आंटी भी ऐसे करेंगी ना कि काम करवाएंगी तो मारेंगी, यही फिर जाकर महीने 1.5-2 बाद ना इस चीज़ पे मुतमिन हुई थी कि हमने नहीं ये झाड़ू पोछा करना, तो ना ही हमने बर्तन धोने हैं, तो ना ही हमें मार पड़नी है। फुली इमोशनल रिकवरी हो चुकी है तो बच्ची बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है और नाजी को सारा भूल चुकी है, कोई ऐसी बात नहीं है उसके अंदर और नहीं है, सही है। Taiba's best friend in the home is another former child maid, Fatima. Slightly older and more confident, she's taken Taiba under her wing. और ये एक बाबी है। 5 साल की थी तो एक घर में मेरी अम्मी ने काम पे लगाया था ना। आप लोगों ने शेयर किया आपस में? जी। हाँ? इसको मैंने थोड़ी सी बताई थी, ज़्यादा नहीं। पहले दिन आई थी, इन्होंने मुझे जो हौसला दिलाया था और इन्होंने मुझे वो भी
खिलाया भी था इन्होंने और इन्होंने तमीज़ भी सिखाई थी। Deva grew up in a small village about 200 miles south of Islamabad. I went to meet her father to find out why the 10-year-old had to leave home to go and work for a judge and his wife. तो तैयबा के साथ क्या हुआ? तैयबा के लिए स्कूल नहीं जाती? नहीं स्कूल नहीं जाती, वो मसला नहीं था। बस ना हमने कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं घर की छोड़ने के लिए, इसलिए मैंने छोड़ी थी। तो किधर? ये उस दौरान मेरे उंगली कट गई थी, ये काम नहीं से कर सकता। बेगम का ऑपरेशन करवाना था, पैसे भी चाहिए थे। अच्छा। हाँ, तो वो ये मैंने ये सैरश बाजी को बोला, सैरश बाजी ने बोला कि चल अच्छा गा रहेगा, तालीम भी दिलाएगा और बहुत आदमी अच्छा भी है, तुम्हारी वैसे खिदमत के तौर उसने कहा तुम्हारे को पैसे में दिलवा देती हैं। तो बच्ची चल उनका एक बेटा उनके साथ खेलती रहेगी और पैसा भी देंगे? हाँ, पैसे भी देंगे इसमें। क्या काम के लिए? काम के लिए मतलब बच्चा आएगा उसके साथ खेलती रहेगी। Children aren't legally allowed to work in most businesses in Pakistan, but despite calls from campaigners, in the vast majority of the country, there's no ban on them working inside homes. There are thought to be over 250,000 children working as domestic servants. Some child maids end up working in homes alongside their mothers or find jobs in their own neighbourhood. But for others, it's much more organised. There are employment agents acting as middlemen, and we're on our way now to meet one of them. Irshad Bibi runs an employment agency on the outskirts of Islamabad. She has no shortage of clients looking for domestic workers and no shortage of families volunteering their children. 4-5 माँ बाप के राब्ते करते हैं, हमारा बच्चा रखवाओ हमारा। वो यही है कि छोटियाँ बच्चियाँ जो है बच्चा खिलाने वास्ते जाती हैं। छोटा बच्चा जो है वो किसी बूढ़े को सब्जी ले आ देती बाजियों को। Some people will say these children shouldn't be working, they should be in school. मजबूरी में ही डालते हैं, किसी माँ बाप का ये दिल तो नहीं करता मेरा छोटा बच्चा किसी के घर जाए। इधर जो है ना जिसकी बच्ची बच्चा दोनों है, वो रो रहा था मेरे पास किराया नहीं है, मकान वाले निकाल रहे हैं, 5,000 रुपया ला दो, ये मेरी बच्ची के काम पे रखो। Amidst the tangled streets of the historic centre of Lahore, we discovered one of the most shocking examples of what can happen to children who are domestic servants. 16-year-old Akhtar died whilst working in the home of a local politician and her daughter. His uncle was the first from the family to recover the body. तो जब मैं उनके घर गया तो खुले आसमान के नीचे कमरे के नीचे पड़ा हुआ था, फेस के ऊपर उसके निशान थे। निशान के बाद उसके बाद पाँवों के ऊपर देखा, दोनों टांगों के ऊपर ज़ख़म थे। और जब मैंने उसको देखने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे साथ झगड़ना शुरू कर दिया। उनकी बड़ी बेटी ने और उसके बेटे ने कह रहे कि हमने इसको नहीं मारा। मैं तो आपको बता ही नहीं सकता कि उस वक़्त क्या मेरे ऊपर गुजर रही थी। हम तो आए थे इधर बच्चों के लिए पेट पालने के लिए, मेहनत मजदूरी करने के लिए। हमें क्या पता था कि हम यहाँ से अपने बच्चों को ज़िबा करवा के और इसकी लाश लेके गाँव जाएंगे। The home belonged to Shah Jahan, a local politician from the ruling party. She, though, was never accused of any wrongdoing. Also living there was her daughter Fawzia. Both women deny abusing Akhtar and say he died from an infection. But Akhtar's 12-year-old sister also worked there. She said she and her brother were regularly beaten by the politician's daughter. भी उन्होंने जलाया हुआ गरम चम्मच लगा के ना और लकड़ी की सोटी पड़ी थी उसके साथ मारा और मेरे भाई की डेथ इनकी वजह से हुई। The police registered a case against Fawzia for killing Akhtar and assaulting his sister last July. The post-mortem on Akhtar's body revealed he'd been beaten repeatedly with a blunt instrument. 25 injuries. 25. The lawyer who represented his father
claims the evidence was clear-cut. बहुत स्ट्रांग केस था, बहुत अच्छा केस था. मेडिकल सारा FIR जो कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशंस एवरीथिंग corroborate कर रही थी. He agreed to take on the case for free as long as Akhtar's father promised to pursue a trial and not take an out-of-court settlement. मैंने उन्हें बहुत फ्रैंकली एक बात मैंने कहा, आपका बेटा है और आपका वो एक खून है. मैंने तेनों से एडवाइस की, अगर आप अकेले भी फेस करो तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा, इस केस को मैं कंटेस्ट करूँगा, मैं आपसे कुछ नहीं लूँगा. जो वो ना चाहते हुए भी वो सुलह इस चीज़ के ऊपर आया था कि उसे होल फैमिली का एक उसके ऊपर एक स्ट्रेस था. Before the trial had even really started, Akhtar's father announced he no longer wanted to pursue the case. Most criminal cases in Pakistan aren't filed by the state, but by the victims or their families. That means that they have the right to drop the charges and to reach a settlement. All they have to do is tell the court that they forgive a suspect in the name of God. Usually the real reason though is that they're being paid off. I visited Akhtar's family home last October. They were building an extension, according to some relatives, with money from a settlement, though they deny receiving anything. At the time, they refused to talk to me. But now I'm on my way back to meet the head of the village, who says he was a witness to at least some negotiations. Muhammad Ali claims representatives of Fawzia's family came to see him and Akhtar's father. परेशानी के आलम था, क्या बनेगा क्या होगा, खौफ तो होता है या ये लोग हमसे ज्यादती ना कोई कर लें. वो उनके साथ हमारे पास आ गए डेरे पे, इनके साथ हम आए हैं तो इनकी सुलह वगैरह करा दें. उन्होंने कहा आप उसको कहें, मैं नहीं कह सकता, वो उनका घर है, उनके पास चले जाएं, आप उनसे खुद कह लें, आप उसे बुला तो दें. हाँ मैं बुला देता हूँ. मैंने असलम को पैगाम भेजा, वो आ गया. It's hard to pin down exactly what happened next. Different people allege different things about who received money to drop the case. But none of it can be proved, and Fawzia's family deny paying anyone anything. I wanted to speak to Akhtar's father directly. राजीनामा कैसे हो गया? बस जी खुदा की तरफ रब तो डर के राजीनामा आप कर लिया. अपनी आपकी इतनी पहुँच नहीं है किसी रब तो डर गया असा भी एक दिन रब दे पेश होना है. भी खबर असा केड़ी हालत च होना है. असा जी आप दे कोई चीज़ लैन नहीं, कोई देर नहीं, असा आप दा राजीनामा कर लिया. अच्छा, माफ़ कर दिता जी. ये क्यों माफ़ किया? बस असा भी एक दिन रब दे पेश हो, सानू कोई असी नहीं जाते तो सवाल जवाब करना जी. तो आप इंसाफ नहीं कर जाते जी? इंसाफ रब ना कोई इंसाफ ही लेना. देखो जी अल्लाह ताला को भी इंसाफ लेना. और इस दुनिया में इंसाफ नहीं चाहते? इस दुनिया ते इंसाफ है ही कोई नहीं. खुदा जो अंदा खुदा की तरफ अंदा है. और आपको भी कुछ पैसा मिल गया? अब तो अंदर से अभी आप फीस बिल्ला माफ कर देता है. कोई पैसा नहीं, कोई पा नहीं, कोई कुछ नहीं. This is where Akhtar's body now lies, largely forgotten amidst the negotiations, squabbling and accusations over money. It would be easy to blame these families for seeming to give up on the chance of justice for their dead children in exchange for a few $1,000s. But when you see the kind of poverty that they live in, then perhaps it becomes completely understandable. The problem is that if no one's ever punished for these crimes, they'll never stop. I wanted to ask Fawzia about the allegations against her myself, but couldn't get an answer. Fawzia lives just up the road from here. We've knocked on her door, we've called her on the phone a number of times, but we've had no response to our allegations. We've been told that at the time of Akhtar's death, Fawzia was working as some kind of teacher. And now because of the fact that she wasn't actually convicted of anything, there's nothing preventing Fawzia from working with children again. Fawzia's mother, who we've been told lived with her at the time, though she isn't accused of any abuse, is still a member of the regional assembly. I managed to track her down.
ये क्यों हुआ ये अफ्रीद के साथ? ये बच्चा कितना जख्मी हुआ, कैसे इतना जख्मी हो गया? आप जवाब क्यों नहीं दे सकते? मेरा सांस नहीं लग रहा है, मेरे सांस में क्या हाल है? So she was just saying that she's out of breath, that she's a heart patient and that she can barely breathe. Obviously didn't want to answer our questions. But it's really hard to understand how she could live in the same house as her daughter and this young boy Akhtar and not know what was going on. That's what we wanted to ask her about. In the case of 10-year-old Deba, the accused did end up on trial. Maheen Zafar was accused of assault, and her husband, Judge Raja Khurram Ali, was accused of cruelty to a child. Before the trial, Deba had told the police and a government official that she had been beaten. When she came to give evidence, she initially confidently repeated the claims, but under cross-examination, Deba contradicted herself and withdrew them. The court apparently noticed a change in her behaviour. In the notes here, it says that whatever the defence lawyers were asking her, she responded with a simple, "Yes, sir." Deba's father Azam, with the help of his lawyer, had tried to drop the charges, but in this instance, the court refused to allow them to do so. तैयबा ने जो हमारे को बताया, हमारे को उसने इतना ही बताया कि मैं सीढ़ियों से गिरी हूँ, मारा नहीं। कैसे तैयबा इस पुलिस वालों को इस तरह का बयान दे सकती कि ये जज की बीवी ने इसको मारा? ये तो पता नहीं, बच्ची को डरा धमका के बयान देते गए बच्ची। आपको इतना यकीन कैसे हो सकता है कि असल मुस्लिम जज और उसकी बीवी नहीं है? उन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चे नेंगे, जिन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चे ने दूसरे बच्चे ना नहीं ये काम कर सकते। आप समझ सकते क्यों ये आपके बात थोड़े से मुश्किल है दूसरे लोगों के लिए एक्सेप्ट करने के लिए? जी, मतलब कि जो आदमी बाहर से देख रही चीज़ है जी, वो समझ पाएगा कि आप गरीब है जी, ये जज और उसकी फैमिली अमीर है जी, तो ये कहीं किस तरह का प्रेशर डाले है आपके ऊपर? नहीं नहीं, हमारे पर कोई प्रेशर नहीं उन लोगों ने डाला, ना उन लोगों ने हमारे को आज तक पैसों का लालच दिया है, ना उन लोगों ने ऐसी कोई धमकी दी है भी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसी बात कोई मसला नहीं है। As long as there are poor families in poor villages, there are likely to be child maids. Irshad Bibi and one of her agents are visiting a village about 4 hours south of Islamabad to meet potential new recruits. तो इस गांव आप कितने बार आते हैं महीने में? हर महीने में अगर बच्चे ज़्यादा हों तो मुझे ज़्यादा बार आना पड़ता है, अगर बच्चे कम हों तो मुझे कम आना पड़ता है। और ये शादी ये सारे फ़ोन कॉल जो आते हैं ये दफ्तर से आ रहे हैं? जी, क्या 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 बात है? वो बच्चे मांग रहे हैं या वालिदैन हैं, कौन है? बच्चे नहीं मांग, हाँ बच्चे मांग रही हैं बहरिया टाउन में फेज 8 से ना। अच्छा, अब ये कॉल आ रही है, बहरिया लिखा हुआ ये तो मसलन और भी हैं लड़के चिन्नौट की हैं। लेकिन कई बार के लोग ये देखेंगे और वो समझेंगे कि ये आपके बिजनेस बच्चे को भेज रहे हैं ना, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बच्चे लोग भेजते हैं तो मैं देखती हूँ, मैं कोई किसी के घर ज़बरदस्ती तो नहीं ले जाती, तो बाकी जो अच्छे लोग हैं उनके घरों में भेजती हूँ। मार पिटाई आज तक किसी बच्चे को नहीं मिली जो मैंने छोड़ी। कभी कभी वो राज़ी नहीं होते हैं और आपको कन्विंस करना पड़ता है कि ये ठीक रहेगा उनके लिए। सर वो इसलिए करना पड़ता है ना क्योंकि आगे की जिम्मेदारी मेरी और खाला की होती है, उसके मुताबिक हम ये कहते हैं कि भाई आप बच्चे भेज दें, बेशक हम उनका जिम्मेदारी लेते हैं। अभी इन लोगों ने मुझे कल कॉल किया। This family say they want to send their 10-year-old daughter to work in Islamabad. साथ आती हूँ। राबिया ने की दस्या कि कर रहे हैं आप, तुम से भेज रहे हैं, दस्या कोई नहीं? अपने बेटे को बोलो कर ला सब। किसी ने कार काम किया पहले? ये तो नहीं दसो कि कार की कर दी है अंडे और की कर दी? बकरी। अच्छा,
ਤੇ ਇਹ ਘਰ अम्मी अबू तो बगैर रह लेंगी उत्थे जाके? जी डर नहीं लगेगा? डर नहीं लगेगा? नहीं जी बात जिवें आदमी गरीबी वास्ते बंदा मजबूरी लेंदा पिया। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਛੋਟੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਕ ਸਲਕ ਵਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਦੇ ਰਹੇ। अच्छा ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦੇ ਆ ਗਿਆ ਬਾਤ ਕਰਿੰਦੇ ਰਹੇ। A few weeks later, I get a call from Taiba's father, Azam. He says he wants to tell me the truth. तैयबा ने आपको क्या बताया? सच्ची बात क्या? तैयबा ने तो ये बताया था मेरे को कि मईन बाजी ने मारा मेरे को इस्त्री लगवाई है, मेरे हाथ जो है वो जलाया है था, रात को बिस्तरा नहीं सी देती। Taiba's father claims his lawyer was paid for by the suspects and convinced him to try and drop the case. इसने गाजी ज़ौहर साहब ने बोला भी आपको लालच नहीं दे रहे हम, ये लालच नहीं है, ये हम दर्दी कर रहे हैं, मतलब है कि हम दर्दी कर रहे हैं, आपको आपके बच्चों के पास मकान नहीं है, मकान भी देंगे, आपको अच्छी सी गाड़ी भी लेकर देंगे, इंशाल्लाह आपका हालात बिल्कुल ठीक कराएंगे। तो उस वजह से आपने बोला ठीक है हम बयान नहीं देंगे उनके खिलाफ? जी अगर आप मतलब है इनके खिलाफ राजा साहब के खिलाफ नहीं चले तो ये आपको मिल जाएगी, हर चीज़ मिलेगी। अभी इन लोगों ने कुछ भी नहीं हमारे को दिया। It's hard to tell what really happened, but his account was corroborated by a second source involved in the negotiations. Taiba's father's former lawyer says the claims are completely untrue and that Taiba's father testified in court that he wasn't under any pressure. The lawyer representing Raja Khurram Ali and his wife Maheen Zafar said the claims were malicious and false. They were convicted of neglecting an injured child and each was sentenced to 1 year in jail. They were acquitted of all other charges, including assaulting Taiba. They remain free whilst they appeal the verdict. For Taiba at least though, there's the chance of a happy ending. When she grows up, she wants to be a teacher because she says children should be in school, not working.